So there are two type of study of motion that is done. Uh, chapter is motion in a straight line, but we'll be initially taking some general term. When we discuss the motion, there are two type of study of motion. First, in which we do study motion, but we don't bother about what is the cause and how much force is required to generate that motion, to stop that motion, to accelerate that motion. So that branch is called kinematics, study of motion irrespective of the cause that produces. Cause is only force. If you apply force for a short period of time, like you hit or something, then it is called impulse. If the force is acting for a long period of time, then there will be acceleration and acceleration will produce the motion. So जब हम मोशन को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज, मोशन किसी तरह स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद जो वेरिएबल है without knowing the cause of motion, we are interested only in that. Kinematics variables are like velocity, distance, speed. The mass will not be important here. So like if it is a 1 kg ball or it is a 1000 kg truck, if it is moving with the same velocity on a smooth surface, from the kinematics point of view, they have the same state of motion. But if we talk about the force, it is exactly not same, because the force required to start or to stop that motion of the truck will be quite high as compared to the that required for the ball. So kinematics variable are distance, displacement, velocity, acceleration, speed. We don't talk about the mass of that particle or how much force is required to generate that motion or to change the motion or to stop the motion. Second branch is called dynamics. I hope all of you are attending the SIRS class. Don't miss it. That will also be required. Dynamics क्या होता है? That is the study of motion based on the forces which governs it. Study of motion based on forces applied on it. So we will have to write the equation of force or equation of motion on forces applied on it. Dynamics is the branch in which we write the equation of force, the force that will produce the motion and subsequent time how much velocity and how much. So like in the kinematics, the gravity, motion under gravity will come under kinematics. We don't bother. 1 gram cotton or feather and the iron ball, they both come with the same acceleration, takes the same time to reach the ground. And then there is another branch that's called statics. Statics, we study about the equilibrium state, the study of body in equilibrium based on the forces acting on it. इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट भी हो सकता है और इसका मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना भी हो सकता है. स्टडी ऑफ बॉडीज इन इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. तो अभी हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स. मीन वी विल नॉट बॉदर किसने फोर्स प्रोड्यूस किया, कैसे किया, कितना किया, बॉडी का मास कितना है, बॉडी का साइज कितना है, डजंट मैटर. For the kinematics, we will assume everything in the form of point mass or the form of particle. That was a hypothetical assumption that Newton made for the classical mechanics. In the classical mechanics, we assume everything to be in the form of particle. Right? Particle is also called as point mass, and point mass means it has mass, but it does not have volume. That's again a hypothetical concept. It is not possible because mass is density into volume. So in the classical mechanics, we will be considering everything in the form of particle. Even the whole Earth moving around the sun will be considered as a point, and that point is exactly at the center where total mass is assumed to be
concentrated. So point mass or particle is something which has mass but no volume. Practically, it is not possible, but yes, which has mass but no volume. It is also termed as point mass. But relatively, we can assume. Relatively, as in. Sir, Yes, beta. sir, dynamics is the study of motion based on focus or what? Force यार, force थोड़ी. Okay, sir. Sir, focus लग रहा है. हाँ नहीं, पूछ लिया करो बेटा ना. थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी माशाल्लाह होती जा रही. आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे वैसे, इसीलिए टू काउंटर पार्ट. बट जहाँ पे डाउट हो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि हैंड राइटिंग थोड़ी सी. ओके, कोई बात नहीं. विच हैज मास बट नो वॉल्यूम. गुड टू आस्क. कभी कुछ समझ में ना है बेझिझक पूछना. Particle is a mass, but it does not have a volume, which is practically not possible. So हम practical scenario में क्या लेंगे? हम practical scenario में mass क्या लेंगे? Point of it किसको लेंगे? When the size of a body is very very small as compared to the path covered or as compared to the system under consideration. जैसे अर्थ को हम क्यों पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं? हाउ कैन वी अज्यूम इट टू बी लाइक अ पॉइंट? because as compared to the distance between sun and earth, the size of earth is negligible or very very small. Similarly, a car moving between Delhi and Mumbai can be assumed like a point object. But car parked in your house, in your garage, cannot be considered as a point object because that's a substantial size as compared to your house. So, point object particle is something hypothetical, but under the approximation that if the size of the particle or the position of an object that changes is if the size of the particle is very very small, size of body, you can say, size of an object is very small as compared to the distances involved, as compared to the distance covered, it is assumed as, it may be assumed as a point object. It may be assumed as point object. एक्चुअल में पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होता. दूसरा टर्म है बॉडी. बॉडी मतलब वो बॉडी नहीं, नॉटी एनी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल विल बी कॉल्ड एज बॉडी. तो जब हम बॉडी बोल रहे हैं इसका मतलब वी आर सेइंग द collection of something which can be where are multiple points, multiple point masses are there and they are distributed over a volume. So if it is a volume, it will be termed as body. If it does not have a volume, it is just like a point mass, it will be called as point object. So I'm just taking NCERT question because it is related to the same reference. Question in NCERT, there are some conceptual questions are there. It says that in which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? Just for discussion, no need to write if you don't want. A railway carriage moving without jerks between two stations. Between the two stations, railway carriage moving without jerk. Can it be considered as a point object or not? You don't have to write. You'll find this question NCERT back exercise just for the understanding, to check the understanding. Yes, Mr. Aditya, how are you? Sir, I'm fine. Very nice. बेटा एक ट्रेन चल रही है दो स्टेशन के बीच में, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे या नहीं? कैन इट बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट? Yes, sir. Okay, very good. A monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track. Okay. Monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track. Naira, एक मैन के सिर पे मंकी बैठा हुआ है and man is moving on
circle. Like कुछ showing some. Yes, Anara. Yes, sir. एक पर्सन साइकिल चला रहा है राउंड एंड राउंड ऑन द सर्कल और उसके ऊपर मंकी बैठा हुआ है. कैन मंकी बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? यस और नो? Yes, sir. यस, Yes, sir. कर सकते हैं. I think so. Okay, anyone else want to explain this, clarify more? Can the monkey sitting on the head of a man, top of a man, who is cycling smoothly on a circular track, can it be considered a point object? No, No, sir, because the because the distance path isn't as is, large as compared to the object. and the path Depends is upon the radius of the circle. The precise answer should हाँ be चाहिए that. सर कंसिडर अगर यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ पे जा रहा है. हाँ, तो सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करेगा ना यार. यस सर. एग्जैक्ट लोगों आंसर. का सर्कल का रेडियस बहुत ज्यादा छोटा है सर, तब तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, लेकिन सर्कल काफी बड़ा है सर, तब हम उसे मानेंगे सर पॉइंट So ऑब्जेक्ट. that's the तो answer I साइकिल was looking for. कर रहे हैं तो छोटा ही. हाँ, मतलब छोटा ऐसा नहीं, अर्थ और सन जितना नहीं होगा, बट ठीक है, मंकी के साइज के हिसाब से तो बड़ा हो सकता है ना. मे बी इन अ फुटबॉल ग्राउंड और साइकिल क्रिकेट ग्राउंड इज. तो इसका तो यस और नो कुछ भी हो सकता है. That's why you have to write the precise answer. That it depends upon the radius of the circular path. बुक में शायद yes या no लिखा होगा, but I am giving you the correct explanation. It will depend upon if it is a very small size, जैसे वो चारों तरफ लोगों को इकट्ठा करके बीच में दिखाते हैं कुछ शो, then obviously it is a very small circle. It cannot be considered as. आप किसी बड़े से सर्कस में, बहुत बड़े से किसी स्टेडियम में, like something like that, then it may be a point object. So there is no absolute answer. It will depend upon the size. Yes. फर्स्ट वाले में भी तो it depends upon the distance between two stations. दो स्टेशन रेलवे के तो मतलब दूर दूर ही होंगे ना, क्योंकि ट्रेन को एक्सलेट होने में और फिर मतलब प्रैक्टिकली 4-5 किलोमीटर की तो डिस्टेंस होती है किसी भी दो स्टेशन में, मतलब लोकल पैसेंजर ट्रेन वाले भी. Okay, Understood sir. ना? Yes, sir. और इसमें सिर्फ एक रेलवे कैरेज लिखा हुआ था, नॉट द होल ट्रेन. साइज ऑफ वन रेलवे कैरेज ऑब्वियसली इट विल बी क्वाइट लेस. दो ट्रेन स्टेशन के बीच में 5 किलोमीटर मिनिमम, 6 किलोमीटर तो डिस्टेंस होती है पैसेंजर ट्रेन वाले भी. So the size will be maximum 100 मीटर एक सिंगल कैरेज का. यस, मतलब जहाँ पे प्रैक्टिकल है वहां पे आपको लिखना है, ऐसा नहीं अननेसेसरी नहीं है. ऐसा तो हर जगह पे हम कर सकते हैं डिस्कशन. A spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. A spinning cricket ball that turns. मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है, सिर्फ जस्ट आई एम डिस्कसिंग सो दैट दिस पॉइंट शुड बी क्लियर. इस डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो पा रहा है. यस, ये थोड़ा सा important पॉइंट समझ लेते हैं. It says that a spinning cricket ball that turns sharply, like a spin off, a spin, कुछ भी. Suppose it turns and then suddenly it dips or it changes the path, जैसे spin में होता है. Is it a particle? Can be considered as a point object? Yes or no? If no, then why? Obviously, as compared to the size of pitch, or maybe as compared to the. But यहाँ पर किसी की बात नहीं हो रही. Not from the size of the pitch, not for the distance. It's talking about the it hits the ground and takes the turn. अब इसको कैसे समझना है? अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट टर्न. व्हाई नॉट? पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन ओनली एंड ओनली मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. जब कोई बॉडी होती है, रॉड होता है, कुछ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, देन ओनली इट कैन रोटेट. अंडरस्टूड? स्पिनिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. एक पार्टिकल क्या स्पिन करेगा, किसके अबाउट कर रहे हैं? So here the ball is not a particle. Sorry, It point cannot be object. considered anyhow. Any body which is spinning or changing its direction cannot be considered as a point object. सर तो फिर मंकी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा.
सर जो मंकी सर यूनिफॉर्मली सर्कुलर पाथ में घूम रहे सर वो स्पिन तो कर ही रहा है सर, वो भी तो नहीं होगा, वो स्पिन थोड़ी कर रहे हैं। वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है सर अपनी बार बार। स्पिन तो वो बैठा हुआ नहीं है। अपने टांग पे खड़ा होकर स्पिन करने लग जाए, दैट इज स्पिनिंग। वो तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करे ना, वो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो साइकिल की प्रॉब्लम। स्पिन मतलब ऐसे ही घूमने लग जाए, इज नॉट स्पिनिंग। इज नॉट स्पिनिंग। कार्तिकेय, कार्तिकेय अंडरस्टूड ना? स्पिनिंग किसने पूछा था अभी? ये किसका डाउट था? मंकी स्पिनिंग और नॉट? सर गोविंद सर। अच्छा गोविंद, सॉरी बेटा, आवाज तुम्हारी मैच करती करती। यस, सो इट इज नॉट स्पिनिंग। वो तो एक सर्कल पे मूव कर रहा था, और सर्कल पे तो पॉइंट भी मूव कर सकता है। एक छोटी सी बॉल सर्कल पे मूव कर रही है, क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट। बट टर्निंग और स्पिनिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पॉइंट। पॉइंट में वो साइज ही नहीं है। हाउ कैन इट टर्न एंड हाउ कैन इट स्पिन? It understood ना? Okay, then next question is tumbling beaker that has slipped off the edge of the table. Again, glass है जो किनारे से टेबल से गिर गया है। Sir, it cannot be considered. Cannot be, because again it starts spinning, it will be rotating. It is not possible for a particle. So there are two concepts. एक तो क्या था? Distance के comparison में, as compared to the distance between the 2 points, उसका size अगर बहुत छोटा है तो हम उसको point of the distance कर लेंगे. But अगर ये rotate हो रहा है, then also it cannot be considered like a point object. बुक में एक्सप्रेशन थोड़े घटिया से लिखे हुए हैं। बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है that as compared to the size of the table, that again depends upon how big the table is. टेबल क्या स्टूल भी हो सकता है छोटा? राइट? ओके, चलो Yes. वापस आ जाते हैं। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो न्यूटन ने बनाया था। हर एक ऑब्जेक्ट को छोटा सा पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। द होल मास कैन बी अज्यूम्ड एग्जैक्टली एट द सेंटर, और उस सेंटर पर हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, वेयर द टोटल मास इज अज्यूम्ड टू बी केप्ट। अब जब बॉडी मूव कर रही है, मोशन, अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में रेक्टिलिनियर मोशन। बॉडी इज इन मोशन और इन स्टेट ऑफ रेस्ट, it will depend upon the frame of reference or the point of observation. We cannot say that a body is in a state of rest, we cannot say that a body is in a state of motion. That will depend upon the point of observation about which we are making that observation, right? So rest is where the position coordinate is not changing. Then with respect to time, it is said to be in rest if the position coordinate, why position coordinate? क्योंकि जब हम 3D में represent करेंगे, then we have to write all the three coordinate. Position coordinate of a particle is not changing with time. Is not changing with time with respect to a fixed reference point. With respect to a fixed reference point, which is also called as origin, the body is said to be in state of rest. Similarly, motion. Motion, if a board position coordinate is changing, also the fixed reference point है, that reference we have to specify. There are two type of possible references or the type of references: inertial frame of reference and non-inertial frame of reference.
हम डिटेल में इसको थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे बिकॉज देयर इट मेक्स डिफरेंस whether the reference of frame is inertial or non-inertial. अभी हम सिर्फ इसको एक छोटा सा पॉइंट या ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं. But the word, technical word that we use here is called frame of reference. Frame of reference को हम बोलते हैं set of coordinate axes about which the motion is observed, or the frame of reference मतलब हमें इस जगह पे पूरा system of coordinate x, y, z, all three axes has to be right. Frame of reference is the set of coordinate axes. अब इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, जो भी हमारा frame of observation है. Set of coordinate axes about which motion is observed. अगर हम अर्थ से ऑब्जर्व करें तो हम अर्थ पे किस जगह पे फिक्स कर देंगे. Suppose motion is observed from the earth, we will assume that this is the frame of reference x, y, z. If suppose from a moving car then object motion is studied, then we will put the frame of reference inside the car maybe. Frame of reference means its kind of origin. So frame of reference may be in motion or it may be in a state of rest. This will be the frame of reference. अगर हम अर्थ पे लेते हैं, and this is the car. Now this car is moving. कार के अंदर suppose कोई block रखा हुआ है. The position coordinate of this block will be changing with respect to earth. अगर हम अर्थ के यहाँ पे origin assume कर लेते हैं, as the car moves, the time passes, the position coordinate is changing. But with respect to the origin which is inside the car, the position coordinate of block is not changing. इन दोनों के बीच में अगर हम यहाँ origin ले लेते हैं, the coordinate of this block x1 will remain x1. So frame of reference we have to always specify. Without that, motion does not make sense. There are two type of frame of references. अभी हम सिर्फ नाम लिख लेते हैं. इनके difference क्या आएगा motion में? Two type of frame of references. वो हम समझेंगे in the third chapter in the laws of motion. Two types of frame of reference. First is the frame of references which are either at rest or moves with constant velocity, called as inertial frame of reference. जैसे अभी हमने अर्थ पे लगा दिया, तो अर्थ को हम एक inertial frame of reference assume कर सकते हैं for us, not for an alien. किसी alien के लिए अर्थ is not at rest. Earth is rotating as well as revolving. हम अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए अर्थ को रेस्ट में अज्यूम कर सकते हैं. द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज either at rest or moves with constant velocity. There is no absolute inertial frame of reference. कोई भी ऐसी चीज नहीं है पूरे यूनिवर्स में जो रेस्ट में हो, except maybe the center of universe. Is center of universe at rest? So could you please show the last? Yeah, sure. Thank you, sir. Okay. Frame of reference, this is just definition, some keywords we are discussing, then we will come to the chapter. Frame of reference which is either at rest or move with constant velocity are called inertial frame of reference. For example, Earth. Earth को हम अपने calculation purpose के लिए assume कर लेते हैं. Maybe car at rest or lift moving with constant velocity. If it is accelerating, then it will not be inertial. Lift moving with constant velocity.
So अभी हमारे पर्पस के लिए हम इस अर्थ को इनर्शियल एज्यूम कर लेंगे और अगर कार एक्सीलरेट हो रही है तो हम उसको नॉन इनर्शियल बोलेंगे. फॉर दिस चैप्टर वी जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द मोशन कि हम किस फ्रेम के रेफरेंस में ऑब्जर्व कर रहे हैं. बट इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस अगर हमारा फ्रेम इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है फॉर द काइनेमेटिक्स. बट व्हेन वी विल सी द डायनामिक्स, जैसे एग्जांपल कार चल रही है, बस चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें कुछ फील नहीं होता. If it start accelerating, then we feel a backward force. Then we feel a backward force in opposite direction, and which causes the body to move behind. Non-inertial frame of reference, the frame of references which are either at rest or which is either accelerating or it is under retardation. The frame of references which are either in acceleration or in retardation, those are called non-inertial frame of references. So what do you mean by retardation? When we apply the brake to the car, that is under retardation. That deceleration is retardation, right? So when a car or bus is moving and we apply the brake, that means it is now under retardation. Then when we apply brake, then also we feel some force. When we accelerate, then also we feel some force. So या तो accelerate हो रहा हो या फिर retardation में हो, decelerate हो रहा हो, in both the cases we always experiences some change in force. Some extra force comes into play in the non-inertial frame of references. Right? Yes. Inertial frame of reference is not possible. Inertial frame of reference practically possible नहीं है. हम अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए अर्थ को inertial frame of reference या जो भी चीज अर्थ के साथ अटैच है, like this road will be an inertial frame of reference. A car standing at rest will also be considered as inertial state frame of reference. Non-inertial का मतलब जो accelerate हो रहे हो, जैसे accelerating lift, accelerating car. Non-inertial frame of references, the frame of references which are either accelerated or retarded. या तो वो accelerate हो रहे हैं या फिर उसमें retardation हो रहा है. Which are either accelerated or retarded. बस चल रही है लेकिन बस accelerate होती जा रही है, उस टाइम पर हम उसको non-inertial frame of reference assume करेंगे. जब हम force के लिए dynamics की question बनाएंगे, then there will be some change for the non-inertial frame of reference, either accelerated or retarded. Example, lift. हम lift में हैं और वो ऊपर की तरफ accelerate हो रही है. Lift accelerating upwards. So shouldn't Earth be an example of non-inertial frame of reference? Earth is non-inertial frame of reference when we observe the motion of Earth from outside. अभी तो हम क्योंकि उसी फ्रेम में हैं तो हम जिस फ्रेम में रहते हैं हमें वो हमेशा रेस्ट में लगता है. If we are in the frame of Earth, हमें अर्थ रेस्ट में लगेगी. हम किसी बस के अंदर चले जाएं, if you don't look outside, then the bus also appear at rest unless there is a jerk or there is an acceleration. Okay, sir, got it. Right? Okay. So अभी इसका खैर यहाँ पे जरूरत नहीं है. अभी सिर्फ ये हमने वर्ड इसलिए यूज कर लिया because when you see then you don't get confused what is that. हमें frame of reference अभी सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और स्पेसिफाई करना है. Only then we can get the exact information about the motion. No object is in absolute rest, so rest and motion are always relative phenomena. अभी हम पढ़ेंगे motion in one dimension in this particular chapter. That is also called as rectilinear propagation. Rectilinear propagation means the body is moving only in one direction, only one coordinate, maybe x, maybe y, maybe z is changing.
then that is called rectilinear propagation, motion in one dimension. Motion in one dimension or motion in a straight line. So we require only one position coordinate, only out of the three. If only one of the position coordinate is changing with time. If only one position coordinate is changing, the body is called as is changing with time. It is said to be in rectilinear propagation. ये थोड़ा सा confusing है. Let's discuss more. Said to be in rectilinear propagation. अगर कोई body एक ही line में चल रही है, अब हम इसमें जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं या तो x में हो या y में हो या z में हो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, then it will be called as rectilinear propagation, right? अगर suppose कोई body straight line में ही है but it is neither x nor y, it is some other line, maybe like this. If a particle is moving along this line, let's say particle A, is it a motion in straight line, yes or no? थोड़ा ना वो कन्वेंशनल नहीं पढ़ रहे हैं बुक में, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा. Just discussing some No. thought provoking things. Can we specify, can we say that this motion is straight line motion, yes or no? चल तो straight line में रहा है Rishit, seems to be straight line only, there is no curve. But y and x दोनों coordinate change हो रहे हैं. X and Y both coordinates are changing, that's correct. Okay, so Sir, if one coordinate is time, time तो खैर हर जगह होगा, time is always there. We are only talking about the position coordinate. okay. Position coordinate is changing with time. Yes, anyone? Arnav, Daryani, is this a straight line motion, yes or no? One dimension or two dimension? Arnav, Sir, the first one. सर the second one. पहले में तो x की तरफ ही जा रहा था, moving along x axis. Yes. सर इसमें सारे 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 के सारे कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं सर, x भी y भी z भी सर. नहीं z नहीं x y में ही चल रहा है, ये प्लेन में ही चल रहा है, बट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सीधे ही जा रहा है. Is it a straight line motion? Sir, are you asking just for straight line or rectilinear propagation? Rectilinear propagation is motion in one dimension, so that's what I'm saying. This motion is in a straight line. Can it be called as rectilinear propagation or motion in one dimension? Yes or no? It is two You know, dimension I motion. think or so one सर, dimension? बोल देना चाहिए सर. Can't. Again, it depends upon the reference axis. हमें किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हमेशा x में ही ये horizontally x लेना है. With respect to the first frame of reference system S1, it is motion in 2D. That's motion in a plane. With respect to the frame of reference S2, x axis कहीं भी ले सकते हैं ना, वो तो हमारी मर्जी है, हमें अटैच करना है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये तो कुछ भी हो जाएगा, मैं भी कोई भी ले लूँ, फिर बोलूँगा नहीं है. हाँ तभी तो बोला ना, इस सब में हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस आल्सो, नॉट जस्ट with respect to earth or with respect to car, with respect to moving body. You have to also specify the position of coordinate axis. Then only we can say it is moving in a straight line or not. ये समझ आ रही, बात समझ में आ रही नहीं? नहीं sir. Rishit?
So, You so understood? आंसर में ये लिखेगा कि coordinate axis mention करना necessary है. आंसर में लिखना है, ऐसा क्वेश्चन ही आएगा यार, ये तो हम बस ऐसे ही थोड़ा फन के लिए, थोड़ी मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, ये सब बुक में क्वेश्चन ही ऐसे. These two situation. एक है किसी प्लेन पे एक बॉल नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए आ रही है. So can we consider it as a straight line motion? Yes. Can we consider it Yes. a rectilinear propagation? Yes. But Depends. if we consider x, y coordinate like horizontal x and vertical y, then it is motion in 2 dimensions. And that's why when we have to analyze this type of motion on the inclined plane, the better position of your coordinate axis in which we can apply all these equations should be x along the plane, y perpendicular to the plane. तो जितनी भी हम कहानी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, that the motion straight line first chapter, all those equations can be applied in this motion also, though it seems that it is moving such that two coordinates are changing, x as well as y. I am just trying to give you some key points जहां पर हमें समझना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए. There is, these points are not mentioned in the book. ये मोशन प्लेन पे नीचे की तरफ हो रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. अगर हम हॉरिजॉन्टल से ले लें और वाई, द सेम मोशन इज 2 डायमेंशन मोशन with respect to frame S1. This motion is 1 dimension motion with respect to S2. 1 dimension motion analyze करना ज़्यादा easy होता है. So we will always choose our frame of references along the axis and perpendicular to the axis. It is still a rectilinear propagation. It is still a motion in a straight line. Got it? Yes, sir. So 1 dimension motion or 2 dimension motion, again, it's not a universal thing that you cannot say kite flying is always a 2 dimension motion or 3 dimension motion. वो अगर एक ही height पर है and just moving, it depends on your choice. ऐसे question है, but जो आंसर बुक में लिखे हैं उससे भी better, more scientific answer हो सकते हैं, because you cannot guarantee that the motion is going to be a straight line. अगर हमने reference axis को fix नहीं किया तो हम अपने reference axis को change करके we can assume, we can change the type of motion. We can observe that motion is not in plane, it is only along one direction. That one direction is along the inclined plane here. Correct? Motion of a free falling body, motion of a train along a straight body, 2 dimension motion, 3 dimension motion. Similarly, in 2 dimension motion, we require 2 coordinate. In 3 dimension motion, we require 3 coordinate. जिसको हम represent करते हैं vectors के form में. So that's why we will see it after the vectors. हम बीच में vectors करेंगे before the next एक chapter. बारी previous slide पे जाना. नहीं सर, ये थोड़ा ना ये डायग्राम जो बने ये verbally explained है, इसमें कुछ लिखा नहीं है. इसको अपने शब्दों में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वरना ये सिर्फ ओके सर. गॉट इज ना. ये दो डायग्राम में क्या एक्सप्लेन हुआ है? फर्स्ट डायग्राम में तो आंख बंद करके बोल सकते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन. अगर ऐसा कोई मोशन है, सपोज एक्स वाई एक्सिस मेंशन नहीं है, बॉल इज गोइंग अलोंग दिस लाइन, इज इट मोशन अ स्ट्रेट लाइन? क्वाइट ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में तो जा रहा है. इज इट अ मोशन इन वन डायमेंशन? कैन नॉट से unless we know the position of coordinate axis, how the axes are oriented. Unless we know that, we cannot guarantee this is motion 1D or motion in 2D or even 3D. 3D में भी straight line हो सकती है, right? Right? Yes, sir. हाँ, थोड़ा मतलब दिमाग खोल के आराम से जो समझ में ना आए पूछ लेना. वो बुक की डेफिनेशन 9th में पढ़ चुके हो आप. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम वो भी करेंगे. बट देयर आर सम की पॉइंट्स जिनमें हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाई इट इज 1 डायमेंशन, व्हाई इट इज 2 डायमेंशन. सो या ठीक है, होपफुली आइडिया इज क्लियर. जब हम स्ट्रेट लाइन में मोशन डिफाइन करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, वी जस्ट रिप्रेजेंट वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, maybe x, maybe y, maybe z. Even if it is moving on any slant line, we can orient our x axis or y axis along that direction so that
the motion can be still governed by one single equation. ठीक है, जैसे रेस्ट था वैसे ही मोशन, हमें मोशन को डिफाइन नहीं किया. रेस्ट में पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम रहता है, मोशन में पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है. So if a body is changing its position coordinate with time, it will be called motion. If the position of an object changes with time, ये लिखने की जरूरत नहीं भी है, अगर नहीं लिखोगे चलेगा. Position of an object changes with time, again with respect to a fixed reference point or origin. With respect to, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोशन स्टार्ट किया था तो अर्थ था हमारा ओरिजिन रेफरेंस पे, चलते चलते हमने कार बना लिया. इट हैज टू बी फिक्स्ड ऑल थ्रू आउट द होल जर्नी with respect to fixed reference point or origin. बाकी फिर आप वो बचपन में पढ़ चुके हो कि मोशन में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, ओके. अब काइनेमेटिक्स से वेरिएबल्स होते हैं. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इफ इट इज इन मोशन, if it is in a motion, it will be covering some distance. Distance was the total path length covered. The total path length covered by a body during its motion. Covered by a body is defined as distance. So distance में it does not matter कि वो किस direction में move कर रहा है. It's moving back and forth, up and down, doesn't matter. But it is just the total distance. So अभी हम एक general सा लेंगे, not just motion straight line, that only for the equation. The body is moving in any path, any curved path. The total length of path traveled will be the distance. Starting from A, moving till point B, distance will be this path length covered. It is a scalar quantity, does not have any direction, and it will always be added. If a motion is carrying on, motion is continuing, तो distance की value हमेशा time के साथ बढ़ती जाएगी, वो कभी भी decrease नहीं हो सकती. Sir, can you go to the previous slide? Thank you, sir. Right. It's a scalar quantity. Again, distance cannot decrease with time. अगर बॉडी चल रही है तो उसकी डिस्टेंस, उसका पाथ लेंथ हमेशा ऐड ही होता जाएगा. कांस्टेंट हो सकता है थोड़ी देर के लिए. इफ द मोशन इज स्टॉप्ड, डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम. थर्ड, it cannot be negative. Distance cannot be negative. Why? Because the direction isn't taken into account. Distance cannot be negative because it is just the magnitude of the length. अगर कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ है, it is cannot be negative because it is a scalar quantity. That is nonsense. If we say that a scalar quantity cannot be negative, then this is total nonsense. Scalar quantities can be negative. Any example of such quantity scalar quantity which can be negative? Govind? Any quantity which is scalar and can be negative? Sir, speed, sorry, velocity. Velocity vector quantity is sir. Sir, Velocity I guess vector, work. Work, correct. Work is scalar quantity and it is negative. Correct. Right? Work is next to distance. Scalar है इसलिए positive negative नहीं हो सकती. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Distance is the
magnitude of path length. That's why it is always magnitude को हम हमेशा positive number से ही represent करते हैं. Displacement is the shortest path length. Displacement is this is the shortest path length joining initial point to final point of the motion. Shortest path length joining initial position to final position of the motion. Initial position to final position of an object. So कोई बॉडी अगर मूव कर रही है उसको हम भूल जाए कि उसने क्या पाथ ट्रेवल किया है. Irrespective of that, take the initial point, take the final point, join them by a straight line, and that is a vector quantity. That straight line, that shortest path represent displacement. So it is a vector quantity and the direction of vector is always along the line joining initial to final position. It is a vector quantity and the direction is along the line joining initial to final position. We always have to specify that direction because it is a displacement is a vector quantity. Since it is a vector, it can be positive, negative, zero. It can decrease with time. It can decrease with time also. Right? By this particular diagram, we can see that distance cover करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. Point A से point B तक पहुंचने के लिए there are many paths possible, but displacement will have only one single value. So ऐसा कुछ लिखते हैं, displacement is a single valued function, while distance is multi-valued function. दो points के बीच में displacement की सिर्फ एक ही value होगी, while distance can have many values depending upon the actual path taken. For any journey, distance will always be greater than or equal to magnitude of displacement. Distance की value हमेशा displacement के magnitude से बड़ी होगी या equal होगी. Equal कब होगी? Distance is equal to displacement only if the body is moving in a straight line without changing its direction. Right? If the body is moving in a straight line without changing. So distance of journey is equal to magnitude of displacement only and only if the body moves along a straight line path without changing its direction. The body moves along a straight line path without changing its direction. सीधे एक लाइन में चलता रहे, अगर वापस टर्न करेगा then it will be changed without changing its direction. इसके लिए जो एग्जाम में वर्ड था, this was the question asked in the exam, without changing any direction, then it is called unidirectional rectilinear propagation. When a body is moving in only one direction in a straight line, so unidirectional rectilinear propagation. Right? So Sir, distance will be equal to displacement for this type of motion, which is unidirectional rectilinear propagation. Otherwise, distance is always greater than or equal to displacement. sir, Yes, beta. sir, if ये क्या लिखा है? If the body moves along straight line, उसके बाद
straight line path. oh, थोड़ा मैं ठीक से लिखता हूँ. Sorry, I started writing very casually. Star straight line path without changing its any direction. So अगर कोई body ने A से start किया, it goes till B. If it is moving in a straight line, the distance is equal to displacement. But suppose it goes A to B and then comes back to C, the same path. Then if it has changed the direction, then distance is not equal to displacement. Displacement will always be less. Distance will always be greater. For the first case, distance is always equal to magnitude of displacement. So we started at origin. This is x equals to 30. Distance, displacement, both 30. It start at 0, x 30, and then again come back to x equals to 20, suppose. In the second case, what is the value of distance covered? Distance 40. covered in this journey is 30 plus 20, 50, irrespective of the direction taken. And the displacement will be final position minus initial position. So if we join the displacement, initial to final position, so it will be towards right. And that displacement is always final minus initial. So 20 minus 0, that's 20 meter. You can see. We can see if the body changes direction, then distance will always be greater than the displacement. It comes back to the same position, then it will be 0. Displacement will be 0, distance won't be 0. सर Yes. फिर सेकंड केस में डिस्टेंस 40 नहीं होगा. Acha, sorry. 30 say 20, 30 plus 10. Yes, yes. Thank you. It goes forward 30 and backward 10 only. So yes, 30 plus 10, it will be 40. The distance covered is the total path length, and total path length is forward में 30 and backward में 10. If it crosses the point A also, then displacement will be negative. The same particle, suppose, starts from A, goes till B, returns back. Started at A, goes till point B, returns back to A, and then further goes in the opposite direction. Started at x equals to 0, x equals to 30, and now final position coordinate is x equals to minus 10 meters. In this journey, what is the distance and what is the displacement? So distance 70 meter and displacement minus 10 meter. Distance forward में 30 meter है, because it is going in the opposite direction. Opposite direction में 30 से origin तक 30, फिर 10 extra in opposite direction, total 40 meter. So distance covered is 70 meter. Displacement निकालेंगे तो final minus initial, irrespective of कि बीच में कहाँ पर थे, क्या किया, the displacement is just final position minus initial position. So इसको हम delta से represent करते हैं. Any type of motion, when we have to calculate the displacement, we will just write final position minus initial position. तो हम कुछ examples कर लेते हैं छोटे से distance और displacement में. Calculate the distance and displacement in the following cases. Calculate distance and displacement covered in the following cases. कुछ तो हमने बहुत पहले क्लास में किया था, which was the very first class. इसको हम थोड़ा फिर से कर लेते हैं. Yes, a person goes, suppose 30 meter east, then 40 meter towards north, then 60 meter towards west. Find its distance and displacement. वो question में पहले लिखा हुआ है. I'm just writing. You have to start. A person
These type of questions we have done, but yes, again you have to do a fresh calculation for this. A person takes a 60-degree turn towards his left after every 10 meter. After every 10 meter. हर 10 मीटर चलने पे वो लेफ्ट साइड में कुछ 60 डिग्री का टर्न लेता है. Find the displacement. Distance तो ठीक है. Find the displacement at fourth and fifth turn. Fourth and fifth means beginning of fourth. Find displacement at fourth and fifth turn. ठीक है, चलिए दो करते हैं. So person goes 30 meter east, then 40 meter north and 60 meter towards west. North, south, east, west. West. Navigable smoke weed. 30 meter, 40 meter. Okay, 30 meter is east. So 50 meters is the answer. So 170 meter हो गया distance. Distance 170 हो गया, बिल्कुल सही. 30 meter east, 40 meter north, and then 60 meter is. Sir, 130 meters नहीं होगा? जो तीनों को ऐड कर देते हैं. 130 meter, 60 plus 40 plus whatever it is. Yeah, ये आ गया 60 meter opposite direction. Distance will be 30 plus 40 plus 60. A to B, B to C, and C to D. Distance covered is the total path length traveled irrespective of the direction. So that will be how much? 130 meters? 130 meters. Now what about the displacement? Displacement के लिए हम initial point को पूरी journey के initial position को final position के साथ join कर देते हैं, and that is to be calculated. कितना है ये? Govind, Yes, sir. what is the displacement in this case? Sir, it will be the shortest possible part, sir. तो वो तो मैंने बना ही दिया यार, उसकी AD. वैल्यू बता दी. वो भी लिख दिया मैंने. उसकी लेंथ कितनी आएगी, वैल्यू कैसे निकालेंगे? That is आपका आंसर. सर हम क्या करेंगे सर? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं सर. पाइथागोरस से निकाल सकते हो, सर- निकाल के बताओ. सर BC जो है सर वो 40 मीटर है, तो हम लाकर 40 मीटर की लाइन ड्रॉ कर दे पैरेलल उससे सर, तो वो जो है मतलब तो उसमें मतलब और उस पॉइंट का नाम हम E रख दे, तो जो AE हैगा जो है वो उसकी वैल्यू आएगी 40 और जो DE है वो उसकी वैल्यू आएगी 30. तो उससे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और फिर उससे AD की वैल्यू आ जाएगी. Sir, 50. 50 आएगा. सीधे आंसर बताओ बस. यस सर, फिर 50 इसकी वैल्यू आ जाएगी सर. Square plus 40 square, that will be 50. So displacement is 50. But we cannot write just like that because it's a vector quantity. So we have to also express कि वो 50 meter किधर है. When you have to express the direction, displacement, it also require direction. 50 meter किधर, ये तो बताओ. 50 meter in which direction? Sir, south. Huh? From the starting point, finally he is landing in which direction? Starting from Southeast. point. So South? northwest. सर साउथ ईस्ट में है. Sir, southeast. Oh, yeah, यार साउथ ईस्ट तो इधर होता है बेटा, नीचे साउथ Northwest. Northeast. Northwest. 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 नॉर्थ वेस्ट. Sir, D से मैं बताने A से. इनिशियल से तो बताओगे ना यार. Okay, sir, मैंने D से भी सोचा है. Always लिखा है भी मैंने, displacement is always along the line joining. It is, the direction is always along the line joining initial to final. Initial Okay, point sir, से got start करके final को join करते हैं. Right. Is it northwest? Yes, sir.
ऐसा कोई जिसका नॉर्थ वेस्ट नहीं लग रहा? चलो मैं हिंट देता हूँ. What is this angle? Are they same? नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ वेस्ट का मतलब हुआ कितने एंगल पे? At what angle? 90 plus theta. Forty-five degree. नॉर्थ वेस्ट कितने एंगल पर होता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच? 45 degree. 45. 45. Bisected. Is this angle 45? यहाँ जो इस triangle में दिखता है. No. कम है. No, it's not theta, right? It's not 45. इस triangle को अगर हम angle को calculate करेंगे, tan theta is perpendicular 30, base is 40. This is 3 by 4. So theta is tan inverse 3 by 4. ये छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री हम यहाँ पे समझ लेते हैं. याद रखने के लिए आपको एक मैजिक ट्रायंगल याद रखना है. मैजिक ट्रायंगल हैविंग दी साइड लेंथ 3, 4 and 5. मैजिक नंबर्स जैसे बोलते हैं हम. 3, 4 and 5. इसमें जो 3 के सामने वाला एंगल होता है याद रखने के लिए निमोनिक 3 के सामने वाला एंगल दैट इज 37 डिग्री. सो अब अगर हमें sin 37 निकालना हो, sin 37 perpendicular upon hypotenuse 3 by 5. Cos 37 is base upon hypotenuse 4 by 5. Tan 37 is perpendicular upon base that is 3 by 4. Correct? तो समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. So ये एंगल कितना हुआ? थीटा is 37 then. Theta is 37 then. Yes, sir. So how do we write this in terms of the direction? ये कितने एंगल पर है? This is not northwest. 37 degree west of north. Yes. Sir, 37 degree west of north. 37 degree west of north. It will be written as the displacement is 50 meter from the initial position और इसकी जो direction है that is ये पहले north से 37 degree west की तरफ और we can write this same as 53 degree north of west. So you can write this is 37 degree west of north, or you can write this is 53 degree north of west. Both directions are exactly same. Right? Yes, sir. Okay, second question. Last question कर लेते हैं. कल next class में we'll do a lot of questions on this. A person takes 60 degree turn towards his left after every 10 meters. Find the displacement at 4th and 5th turn. On which path he is moving? On which path he is moving? Sir, equilateral triangle. Equilateral triangle. Yes, sir. Arnav Daryani, on what path he is moving?
So equilateral triangle. Hexagon. Hexagon, yes, it's not moving on a triangle, an equilateral triangle, because equilateral triangle में तो 120 degree का turn. Hmm. In the case of equilateral triangle, that will be turn of 120 degree. He is taking turn of 60 degree after every 10 meters. So ये हो गई first turn. This is starting point A. At the second turn, again 60 degree. Third turn, again 60 degree. Fourth turn. तो यहाँ पे पहुंच गए. ये displacement हो गया initial to final join करने वाली line. This is the displacement we have to calculate at the fourth turn. So because we know that this is interior angle of an of a regular hexagon is how much? 120. Yes, sir. Draw perpendicular, ये आ जाएगा 60. So this perpendicular length will be 10 sine 60. Similarly, the base one will also be 10 sine 60. So the displacement at the fourth turn is how much? 20 sine 60. Displacement is 20 sine 60, that is 20 into root 3 by 2, which is 10 root 3 meter. Fifth turn पे पहुंच गया जब, at the fifth turn, the displacement is only 10 meter. अब इसमें डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. उसकी इनिशियल जो फर्स्ट स्टेप की डायरेक्शन थी वो हमें पता नहीं है. If he is moving towards east, it's mentioned. Then we can say at the fourth turn it will be towards north. Displacement at fifth turn will be 10 meter. Magnitude of initial से final को join करेंगे, and that line will be equal to 10. Right? Okay, so we will solve more numerical based on distance displacement calculation. थोड़े और अच्छे वाले in the Wednesday class. ठीक है, okay. Doubt किसी को हो तो doubt पूछ लो. Thank you, sir. Understood this question? Yes, sir. Okay. ठीक है, thank you. That's it for today. Thank you, sir. Thank you, sir.